وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Inshallah, tonight we begin from verse number 18 of Suratul Kahf, 18 of Suratul Kahf. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala to make this session most productive and help us to understand every verse in the right perspective. Kindly keep only the Musaf in front of you. Don't keep the translations, and keep your eyes focused on the Arabic of the words and follow them closely. May Allah make it easy for all of us. Ameen Ya Rabbal Alameen. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. And you considered them to be awake while they were asleep. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. And we kept turning them to the right and to the left. And their dog stretching forth its forelegs bil wasid at the entrance. Had you looked at them, surely you would have turned away from them in flight, and surely would have been filled in your hearts of them, in your hearts in bracket, and surely would have been filled in your hearts from them, roba, terror. और तुम समझ रहे थे कि वो बेदार हैं जबकि वो सोए हुए थे, और हम उनको करवटें बदला रहे थे दाएं और बाएं, और उनका कुत्ता फैलाए हुए अपने पैर दहलीज के पास या चौखट के पास. अगर तुम देखते उनको तो जरूर फिर जाते उनसे फरार होकर, और जरूर बैठ जाता तुम्हारे दिल में उनके बारे में दहशत, या हो जाती तुम्हारे दिल में उनसे दहशत. Just a recap of this particular subject of the Ashab Kahf for those who had not been there in the last class, and also in order to have a continuity on the subject, which inshallah we will complete today. There were some youth who had firm conviction in one God, which means that they were true monotheists. But the situation and the condition prevailing in that city or town in which they lived was entirely opposite to Tawheed, which meant it was full of shirk, to the extent that even the king and the ruler of that particular kingdom was a true polytheist, and he would not be able to tolerate anyone practicing the ideology of monotheism. So when he got the information that there was some youth who has rebelled against this ideology, he immediately summoned them and gave them an ultimatum and said, अब तुम जो है इस तौहीद के अकीदे को तरक करना पड़ेगा, वरना तुम्हारी जान का खतरा है, हम तुमको कत्ल कर दें. You will have to give up this ideology of monotheism, or you will be put to death. Now these young men were in a state of confusion. They were at the crossroads. If they would be concerned about their life, then they will have to forego the ideology of monotheism. And if they're going to hold on to the ideology of monotheism, they'll have to give up their life. दो में से एक. अगर ये तौहीद के अकीदे को मजबूती से पकड़ लेते हैं, थाम लेते हैं, तो इनको जान खोना पड़ेगा. अगर जान की हिफाजत करें, फिर जो है उनका ईमान खतरे में पड़ जाएगा. No, they were in a big difficult situation. You all remember the dua, which of course is there in the Quran, which also emphasized its importance, was Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Beautiful dua. Verse number 10, if you can look into it, you'll be able to know in the same surah. Whenever you are at the crossroads, unable to take a decision, maybe in your day-to-day life, maybe related to akhirah, related to your faith, excellent dua. Allah subhanahu wa ta'ala will pave out a way where your iman also will be preserved, and you also will be successful in the endeavor which you are undertaking. Beautiful dua, excellent dua. You will get clarity.
and you will take the right step forward and take the right decision. Excellent dua. So Allah subhanahu wa ta'ala immediately accepted this dua and then guided them to a cave on the outskirts of the city in a very remote place where Allah gave them refuge and protection. And the moment they entered the cave, they went to sleep. Now, from here onwards, we are continuing. I've been a little brief. There's some other aspects as well as mentioned over there. But how Allah subhanahu wa ta'ala made the arrangement where the sun's rays would not penetrate into the cave to that extent where it would create discomfort to the sleepers of the cave. And at the same time, Allah made sure that some light enters the cave and they should not be in the dark completely because it will not be good for their physique. Likewise, now Allah subhanahu wa ta'ala making another arrangement about which we have spoken just now. और क्या था इंतजाम? पहला इंतजाम क्या था अल्लाह का कि जो है ये बिल्कुल दूर की जगह में कोई किसी का आना जाना नहीं हो ताकि लोग को डिस्टर्ब ना किया जाए. दूसरी चीज अल्लाह ने दूसरा इंतजाम जो किया वो ये थे कि सूरज की शुआएं अंदर नहीं जाती थी उस गार के अंदर पूरी तरह से, थोड़ी सी जाती थी जितनी जरूरत थी उन लोग को जिंदा रहने के लिए. अब तीसरा इंतजाम जो अल्लाह इधर कर रहा है वो ये है कि अल्लाह उनको करवटे में डाल रहा है. Allah is making them turn to the left and the right. As we also, when we sleep, we are also not aware. Unconsciously, we also keep turning to the left and the right. When we slept, we would have slept on the right, but when we get up, sometimes we notice that we have slept, we are getting up from the left. This happens, and this is happening every night. Likewise, even for these, Allah subhanahu wa ta'ala made sure that they will keep changing their positions. Another very important arrangement which Allah made was a dog also followed them when they went. They did not take any dog, but a dog, by the order of Allah maybe, just followed them. And when these Ashab-e Kahf went inside the cave, the dog remained at the entrance like as though it was a security guard. हवलदार की तरह जो है ये बैठ गया, like a security guard. And that particular scene was so eerie in its effect that nobody would even dare to go near it or take a look at it. अल्लाह ने इसको ऐसे बनाया कि किसी की इतनी जरूरत नहीं होगी कि उस गार के करीब भी जाए. एक तो जो है ऐसी जगह पे ना कोई जो है उधर जाता ना कोई आता. दूसरी चीज अंदर लोग सोए हुए हैं, अजीब व गरीब मामला. फिर उसके ऊपर कुत्ता बैठा है एंट्रेंस में, कोई जरूरत करेगा उसके करीब भी जाने के लिए. तो अल्लाह ने ऐसे इंतजाम किया कि they should go undisturbed, that these sleepers of the cave should not be disturbed. ये अल्लाह का खुद का इंतजाम था. आगे अल्लाह फरमाता है وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. And thus we raised them, that means we woke them up, that they may question one another between themselves. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ, said one among them, كَمْ لَبِثْتُمْ, how long you remained or how long you stayed? They said we would have stayed for a day or a part of a day. They said your Lord knows best how long you remained or stayed. فَبَسُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ, then send one of you with your silver coin this towards Medina, towards the city. Then let him see where he could get the purest of the food. Then let him bring to you some provision from it. وَلْيَتَلَطَّفْ, and let him be careful. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا, and let not get to know about you anyone. और इसी तरह हमने उनको उठाया ताकि वो सवाल करे आपस में एक दूसरों से. कहा एक कहने वाला उनमें से, कितनी देर तुम रहे? उन्होंने जवाब दिया, हम रहे होंगे एक दिन या दिन का एक हिस्सा. उन्होंने कहा, तुम्हारा रब खूब जानता है कितनी देर तुम ठहरे रहे. बस भेजो तुम में से किसी को तुम्हारे इस चांदी के सिक्के के साथ शहर की तरफ, और चाहिए कि वो देखे कहाँ अच्छा खाना मिलता है या पाकीज़ा खाना मिलता है,
फिर चाहिए कि वो ले आए तुम्हारे पास कुछ रिस्क वहां से, और चाहिए कि वो एहतियात बरते और ना मालूम हो जाए तुम्हारे बारे में किसी को। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इंतजाम इतना बेहतरीन बनाता है। हमको मालूम होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हर हुक्म के पीछे हिकमत होती है। अल्लाह की मशीयत, अल्लाह की हिकमत, अल्लाह के अहकाम कोई नहीं समझता, कोई नहीं समझ सकता। बस अगर ईमान ताज़ा है, ईमान मुकम्मल है, ईमान मजबूत है, तो अल्लाह की हम्द और सना के सिवा इंसान और कुछ कह नहीं सकता। अगरचे कि कोई नाकामी ही क्यों ना हो, तब भी उसको मालूम होना चाहिए कि मोमिन को कि इसमें भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुछ खैर रखा होगा, और ये कोई मामूली चीज नहीं है। एवरी ऑर्डर, एवरी इंस्ट्रक्शन, एवरी एक्ट, एवरी सिचुएशन, decisions which Allah takes is absolutely based on perfect wisdom, unquestionable. And as a true believer, if we have total trust and faith in Allah, we will always say, "Oh Allah, thanks and glory be to you." Even though it may be some kind of a disappointment to us, but definitely we should accept the fact that even in this, there's something good which Allah subhanahu wa ta'ala has decided for us. अगरचे कि उसके अंदर कोई शर है, कोई नाकामी है, तो इसमें भी अल्लाह ने खैर का पहलू रखा है उसके अंदर। ये कामिल ईमान एक मोमिन के अंदर होना चाहिए, और यही जो है ईमान का तकाजा, द वेरी इंपॉर्टेंट criteria and condition of strong faith is that you accept every verdict of Allah subhanahu wa ta'ala and be grateful and glorify and praise him. That's, I mean, in matters where you're feeling happy and okay, then it's quite easy. But at the time of even disappointment which you and I may encounter and experience, may Allah protect all of us. But then at that point of time also, to accept the verdict of Allah and praise and glorify Allah is absolutely awesome. It's really awesome. And for the rewards of that also Allah subhanahu wa ta'ala has given. Phenomenal. उसके जो अजर भी अल्लाह जो देगा ना, you can't even think of it. गैर मामूली. So now these people are getting up, now they're feeling hungry, and they're telling each one, please go and get some food and come, we're feeling hungry. But be careful, because they are now thinking that they're still living at a time when the king has enforced his order that these dwellers of the cave or these young men should not be allowed to live. And so they're scared of their life, and they think that suppose somebody gets to know, then once again we summon with the king and he may put us to death. So we need to be very careful. They're scared of their lives. तो इनकी अपनी जो है जान की बड़ी फिक्र होती है. इन्नहुम यज़हरु अलैकुम यरजुमुकुम व युईदुकुम फी मिल्लतिहिम वलन तुफ्लिहू इदन अबदा. No, the reason itself that Allah subhanahu wa ta'ala has put in here. Verily if they get to know about you, yarjumukum, they will stone you to death. Or yu'idukum fi millatihim, or you may have to turn to their religion, or you may have to return in their religion, and never you will be successful in such a case ever. बेशक वो अगर मालूम हो जाए तुम्हारे बारे में, वो संसार कर देंगे तुम्हें, या तुमको लौटना होगा उनके दीन में, और हरगिज नहीं तुम फलाह पा सकोगे ऐसी सूरत में कभी भी. तो उनको यही फिक्र थी कि हमारा ईमान भी जाएगा, जान भी जाएगी. हमको ईमान की भी हिफाजत करना है, जान की भी हिफाजत करना है, तो हमें एहतियात बरतना चाहिए. वकज़ालिका आसरना अलैहिम लियअलमू अन्ना वअदल्लाहि हक़ व अन्ना अस्साअत ला रैब फ़ीहा इज़ यतनाज़ऊना बैनहुम अमरहुम फ़ख़लफ़ना अलैहिम बुन्याना रब्बुहुम अअलमु बिहिम क़ाल अल्लज़ीना ग़लबू अला अम्रिहिम लनत्तख़िज़न्ना अलैहिम मस्जिदा. See, whatever precautions, however well we use our intellect, and we need to also, we should not be foolish. Whatever Allah subhanahu wa ta'ala has given us, the know-how, the expertise, the knowledge, the intellect, we must put it to use. There's no second opinion on that. हम अपने अक्ल को इस्तेमाल करना, एहतियात लेना, ये हम उतना ही कर सकते हैं. लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के प्लान्स कुछ और होंगे. कितने भी एहतियात लो, तो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो फैसला किया वही होने वाला है. हम देखते हैं, we studied that even in the case of the Surah Yusuf, Yaqub alayhi salam said, don't enter through one gate, enter into different gate. But at the same time, what does Yaqub alayhi salam say? Still, if Allah subhanahu wa ta'ala wants, still he can get you into trouble.
I can only take precautions and give you this advice. Let's is up to Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah. हम लोग कितने भी जो एहतियात ले, कितने भी हम अकल को इस्तेमाल करना भी चाहिए, लेकिन इस बात को लेकर चलना है कि इसके बावजूद अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फैसले कुछ और भी हो सकते हैं, जिसके लिए हम राजी होना चाहिए और इसको मान लेना चाहिए. We should be prepared to accept Allah subhanahu wa ta'ala's decision, which sometimes maybe not be in our favor as we may think, but at the end of the day, it's only Allah subhanahu wa ta'ala who takes decision in every affair of us and in every affair of this universe. So in spite of taking all these precautions, what happened? Allah says, and thus we made known about them. And thus we made known about them that they may know. Who may know? That the people of the city may know that the promise of Allah is true and that there's no doubt in it, is yatanazawna bainahum. When they were disputing between themselves their affairs, then they said, build upon them bunyana, a structure. Their Lord knows best about them. Said those who had prevailed over their affairs, لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا, surely we shall build upon them a place of worship. और इसी तरह हमने मालूम करवा दिया उनके बारे में, ताकि वो जान ले, जाने का कि वो बस्ती वाले जान ले कि अल्लाह का वादा सच्चा है और कि क़यामत की घड़ी नहीं कोई शक उसमें. जब वो झगड़ रहे थे आपस में उनके मामले पर और उन्होंने कहा तामीर करो उन पर, यानी उस गार पर तामीर करो एक इमारत. उनका रब खूब जानता है उनके बारे में. क़ाल लज़ीना ग़लबू अला अम्रिहिम, कहा उन लोगों ने जो गालिब आ गए थे उनके मामले में, जरूर हम बना देंगे उन पर, यानी उस गार पर एक नमाज की जगह या जो है एक मस्जिद. Allah subhanahu wa ta'ala is now saying these people wanted to take precautions and they were of the opinion that nobody should get to know about them, otherwise they will have to face the consequences of their preserving their iman, etc., etc. But Allah's plan was different. हम एक सोचते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फैसला कुछ और होता है. ऐसे होता है जिंदगी में, हमारे हजार मंसूबे होते हैं, हजार प्लानिंग होते हैं, करना भी चाहिए, मशवरों के साथ हम प्लानिंग करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि तमाम हमारे मंसूबे और प्लान्स should turn out to be perfect. Not necessary. It will not happen also in most cases. We put our trust in Allah and we move forward. That's all we can do. We consult, we take decisions, we make our plans, we make our policies, we put our trust on Allah. That's all we can do. So Allah had a different plan altogether. Allah made sure that the people get to know about them. How did it happen? According to the tafsir, it is said that this person who went with the silver coin to the city obviously would have taken the silver coin, which was hundreds of years old, and that currency would have been outdated altogether. His dialect, his pronunciation, his language also would have undergone a major shift. And then his attire, उसके कपड़े, उसका लिबास, उसके बोलने का लहजा, फिर वो सिक्का, ये तमाम चीजें आउटडेटेड हो गए होंगे. और जिसके पास लेके जाकर जो है ये शख्स सिक्का दिया होगा खाना खरीदने को, वो दुकानदार परेशान, अरे ये कौन है अजनबी आदमी, he is very very weird and strange person, come from the third world or what. He's brought a currency which is outdated, his attire is outdated, his way of talking is outdated, he is looking so strange, we've never seen this person at all. So slowly the number of people in his shop or the hotel or whatever the place was, people start gathering around. And slowly the information now reaches the mayor of the city or whatever you call, and then goes to the king. No, the king immediately comes along with the governor, whoever it is, they start coming, the officials start coming now to the marketplace to see for themselves who this person is. So in this way, Allah subhanahu wa ta'ala makes known to the people about the sleepers of the cave or the dwellers of the cave. Why? Allah himself says, لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ, that they may know that the promise of Allah is true. وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا. The second thing is that the hour, the Yawm al-Qiyamah, is a sure reality, no doubt in it.
These are the two things which Allah subhanahu wa ta'ala wanted to send a message to them, because now the regime had changed. That king who was there is no longer existent. Obviously, so many hundreds of years he would have passed away. The whole governance changed, the regime changed. पूरा जो है वहां पे जो पॉलिटिकल सिनेरियो था पूरा चेंज हो गया. एक नया बादशाह आया, and he was presumably a Christian king who had some knowledge of deen. So he was in favor of Tawheed. But as far as the hereafter is concerned, they had a lot of arguments whether there's a hereafter, no hereafter, etc. ऐसा ये बहस चल रहा था कि क़यामत है नहीं है. तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस वाक़े से ये बताना चाहता था कि क़यामत की घड़ी जरूर वाक़ होने वाली है. अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहे हम कितने साल भी 100 साल हो, 20 साल हो, हजारों साल हो खबर में मदफून हैं, तो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूरा इख्तियार रखता है कि तुम हमको दोबारा उठा खड़ा करे जैसे हम पहली बार दुनिया में रहे थे. ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला प्रूव करना चाहता था कि no matter how long we would have lived in the graves, be it hundreds of years or thousands of years, Allah still has the power at his disposal to resurrect us and bring us back to life as we had lived for the first time. This is the point which Allah subhanahu wa ta'ala wanted to send home the message to the people. And instead of accepting this message and coming to accept the fact that the Yawm al-Qiyamah is a sure reality, now how shaitan is now distracting them, that's the point that Allah is trying to convey here. अब इनको जो है ये बात पूरी यकीन के साथ मान लेना चाहिए था कि क़यामत घड़ी जरूर आने वाली है, और ये लोग इतने सालों के बाद भी अल्लाह ने इनको दोबारा जिंदा करके उठाया, तो हम भी जो है मर जाने के बाद हमको भी अल्लाह ऐसा जिंदा करके उठाएगा. ये पैगाम असल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला देना चाहता, लेकिन शैतान उल्टी जो है उनको जो है पट्टी पड़ाता है. अब क्या करते हैं ये लोग, जैसा आज भी हमारी कौम ऐसे ही करते हैं ना, नऊजुबिल्लाह. कोई वली हैं, कोई शेख हैं, कोई पीर हैं, कोई अल्लाह वाले हैं, तो इनके इंतकाल के बाद क्या करते हैं, पहले मजार बना लेना. भाई अरे ये तो ये बड़े शख्स थे, बड़े जो है तकवा वाले थे, परहेजगार थे, इनके जो है एक मजार बनाना चाहिए, दरगाह बनाना चाहिए, और इनको हमको याद करना चाहिए, फलाना फलाना. फिर क्या होता है, स्लोली शिर्क स्टार्ट्स गेटिंग इनसाइड. And that poor soul who led such a saintly life, holding on firmly and strongly to the ideology of monotheism, now the people are making the complete mockery of the entire concept and now converted that person's grave into a place of shirk. This is exactly what they did. So sad, so unfortunate that it happens even today. Very sad. Prophet ﷺ has said, Allah subhanahu wa ta'ala has cursed the Jews and the Christians because they made their graves of their saints, and they made the graves of their prophets and the righteous people places of worship. Allah ने लानत की है अहले किताब पर, यहूद और नसारा पर, जिन्होंने जो है अंबिया इकराम की और फिर जो है नेक लोगों के खबरों को इबादतगाह बना दिए. अल्लाह की लानत होती है, उतरी है उन पर. तो अल्लाह के रसूल ने कहा तुम ऐसे मत करो, यू डू नॉट डू दिस. इसलिए कब्रिस्तान में जहाँ पे लोग को मदफन किया जाता है, वहां कोई जो है निशानी ना रहे. छोटा सा जो है प्लेटफॉर्म हो सकता है या टेला हो सकता है, जस्ट टू आइडेंटिफाई दैट देयर इज अ ग्रेव हियर सो दैट इट शुड नॉट बी ट्रैम्पल्ड अपॉन और डिसैंक्टिफाइड. ठीक है, सिर्फ निशानी के तौर पर एक गारे का पत्थर हो या हल्का सा जो है मट्टी जो है उसको थोड़ा सा एलिवेट किया जाए ताकि मालूम हो जाए कि वहाँ खबर है, ताकि उस पर जो है उसकी बेहुरमती ना हो. बस इतनी इजाजत है शरीयत में. लेकिन आज भी हम देखते हैं today also, but we see that there are tombstones, put huge tombstones, names written, फला फला, son of so and so, कुरान की आयतें, date of death, etc etc. साइड में भी उसको जो है डिमार्केशन किया जाता है. और फिर कोई और भी जो है नेक इंसान है, he been a very responsible person, a leader of the community or something very important, तो जो है उसको जो है और भी जो है शानदार बनाया जाता है. नौजुबिल्लाह, फिर शिर्क की तरफ लोग चले जाते हैं. And this is something which Islam wants to eliminate it altogether. Let us at least be role models. Let us tell our children or our relatives, when we die, nothing of that sort should ever be put. If you put, you will be answerable to Allah. All your love for us, converted in the form of duas for us, not by making our places of graves look obvious. नहीं, हम कम से कम ये रोल मॉडल बने. कम से कम हमारे वालिदैन के खबरों को अगर हमारे पास इख्तियार है तो ये तमाम चीजें अगर हैं तो भी निकाल दें.
क्योंकि ये शरीयत के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है। और कोई चीज शरीयत के कानून के खिलाफ अगर हम करेंगे, अल्लाह के पास पकड़े जाएंगे, अल्लाह के पास पकड़े जाएंगे। अल्लाह हमारे रोजे, उम्रे, ज़कात, हज सबको आप तेरे बाजू रख देगा। अल्लाह का भेजा हुआ कानून शरीयत का, इसकी बात जरूर की जाएगी। Allah will set aside your umrahs, your namaz, your tahajjud, everything aside. Allah will say, how come you broke the law of the Sharia? How you could break the law of the Sharia? You are not supposed to make your graves pakka khabars. No, that is not allowed. Tombstones not allowed. This is the way you want to show your love to your near and dear. Pray for them, do dua for them, follow the goodness which was there, and they follow that. Seek forgiveness for them if you truly love them. We go to the Khabrastans for our own ibrat. Remember that. Otherwise, we can pray for the souls wherever we are in any part of the world. हमारे अकारिब और रिश्तेदारों के लिए, हमारे अगर वालिदैन भी इंतकाल कर गए हैं तो इनके लिए भी दुनिया में कौन से कोने में बैठकर भी जो है हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं। अल्लाह उनको दुआ, हमारी दुआ को जरूर कबूल करेगा और उनको जो है हमारे दुआओं का फायदा भी पहुंचाएगा। हम जाते हैं कब्रिस्तान को अपनी इबरत के लिए कि हम भी एक दिन इधर आने वाले हैं, मनो मिट्टी में हम भी मिलने वाले हैं। हमारे जो है बड़े बड़े मकानात, हमारे जो फ्लैट्स हैं, हमारे जो लग्जूरियस बंगलोज हैं, ये सब छोड़ छाड़ कर हम 3x6 के अंदर आने वाले हैं। ये याद दहानी के लिए हम कब्रिस्तान जाना चाहिए, वरना दुआ तो जो है कब्रों में मदफून वाले लोगों के लिए हम दुनिया में कौन से कोने में भी बैठ के दुआ कर सकते हैं। We go to the Qabristans for us to draw a lesson that one day we are also going to come and sleep here. This is our final abode. What preparation have you made for it? When is that going? When is the time going to be? And that's the time when all our accounts will begin. A new life, the curtains of a new life will be unfolded. एक नई जिंदगी, नई दुनिया हम देखेंगे। कोई नहीं होगा वहां हमारे साथ। उसके लिए क्या तैयारी किए हैं, ये असल में जो है हमारे को एहसास होना चाहिए जब हम कब्रिस्तान जाते हैं। और इसी के लिए हमको कब्रिस्तान जाने का हमें जो है तरगीब दिलाई गई। We have been motivated to visit the Qabristan more often because it will remind you of the hereafter. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. Soon they say 3, their 4th their dog. They say 5, sadisuhum kalbuhum, their 6th their dog. Rajman bil ghaib, guessing at the unseen. And they say 7 and their 8th their dog. Say, my Lord knows best their number. None knows them except a few. Fala tumari fihim illa miran zahira. So do not discuss about them except a discussion cursory. And do not inquire about them from anyone ever. अनखरी वो कहेंगे वो 3 थे, चौथा उनका कुत्ता था, या वो कहेंगे 5 थे, छठवां उनका कुत्ता था। अटकल दौड़ाते हैं गैब के बारे में। और वो कहेंगे 7 उनका, 8वां उनका कुत्ता था। कह दीजिए मेरा रब खूब जानता है उनकी तादाद, कोई नहीं जानते उनके बारे में सिवाय थोड़े। बस ना तुम बहस करो उनके बारे में एक बहस सरसरी, और ना तुम दरियाफत करो उनके बारे में किसी से। So the important message was that the day of Qiyamah, we will be resurrected, we will stand accountable before Allah subhanahu wa ta'ala, and the Yawm al-Qiyamah is the sure reality. This is the actual message. So one is Shaitan distracted them, deviated them, and now started putting them into a discussion about going ahead to make a memorial or a mausoleum. एक दरगाह या एक जो है एक इबादत का बना दे उन पर. This is the first thing Shaitan does and has done. Second is he gets them into these type of discussions. 3 थे, चौथा उनका कुत्ता था, 5 थे, छठा उनका कुत्ता था, 7 थे, 8वां उनका कुत्ता था। अरे तुमको क्या लेना देना कितने लोग थे और क्या था उनकी तादाद, ये असल जरूरी नहीं था। आज हम भी ऐसे करते हैं ना, 8 रकात या 20 रकात, इस पर बहसें। Every year come Ramzan, this becomes a hot topic and a subject of discussion. How Shaitan has also put his best efforts on how we become victims. अरे 8 रकात तो पढ़ो लेकिन खुशी और खुशू के साथ पढ़ो, 20 रकात पढ़ते हो खुशी और खुशू के साथ पढ़ो, अल्लाह का खौफ तुम्हारे अंदर पैदा हो,
हाफिज साहब क्या पढ़ रहे हैं वो समझ के नमाज पढ़ो, ये जरूरी है। You read 8 rakat, that also has evidence. Read it with khushu and khuzu. You want to read 20 rakat, alhamdulillah, that also has evidence. Read it with khushu and khuzu. And also understand, try to understand what is the hafiz reciting, don't the language of the Quran. And alhamdulillah, this is what we are doing. Instead of that, 8 rakat पढ़ना की, 20 rakat पढ़ना की, हाथ यहाँ बनना की, यहाँ बनना की, नीचे बनना की, रफे देन करना नहीं करना, उंगली हलाना नहीं हलाना, पैर कितना दूर करना कितना नहीं करना, आमीन जोर से बोलना आहिस्ता बोलना, नमाज के बाद दुआ जोर से बोलना आहिस्ता बोलना. I get into all these petty discussion, and this is how we drain out all our resources and all the time and all our energy. This is exactly what shaitan will do. Exactly what shaitan has done even for us today. And we have unfortunately become victims of shaitan by getting into all these petty issues. Does anybody tell you don't cheat in business? Don't commit fraud, don't backbite, don't speak lies, don't gossip, don't waste time, don't do israf. Nobody talks about that. तिजारत ईमानदारी के साथ करो, हलाल रोजी कमाओ, झूठ मत बोलो, गीबत मत बोलो, धोखा मत दो. कोई ये बोलने की ना जरूरत रखता है ना बोलते हैं. वाज और बयान में भी ये 8 रकात पढ़ो, इसके पीछे एक बड़ा एक सब्जेक्ट बनाकर 1 घंटा सर्व करेंगे सिर्फ 8 रकात को प्रूव करने के लिए. फिर एक और मस्जिद में 20 रकात प्रूव करने के लिए घंटा 2 घंटे, और कितने हफ्ते जो है इसी डिस्कशन चलता है. नौजुबिल्लाह. How sad. Even a very important moment like a Jummah, which is one of the rarest gifts of Allah, where we get a ready-made audience in front of us, and how we let go it without making or without encashing upon that precious time. आज 10 लोगों को जमा करने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं. Ask me because I conduct so many programs. यहाँ पे हमें रेडीमेड ऑडियंस मिलता है, 500 1000 लोग सिर्फ अजान सुनकर आ जाते हैं, और उनके सामने जो पैगाम रखना है वो इस किस्म के पैगाम जो है ना किसी उसके अंदर ना दम है, ना उसकी कोई बेसिस है, ना उसके बारे में कोई इंपॉर्टेंस है. हम इसी में जो है हमारे वक्त को जाया करके हमने जो है कौम का जो है वक्त जाया किया है. जवाब देना पड़ेगा अल्लाह के पास. How many girls today are running away and eloping with non-Muslim boys? Do you know? Muslim girls. Why? Either we not trained them well or because of the dowry menace. इसके बारे में कौन बात कर? बोलने तो बहुत कुछ है. Then if I let go, then I'll be once again moving away. So the actual point is always look into the essence of every instruction of Allah. Allah क्या कहना चाहता है. इस इबादत से अल्लाह सुब्हानहू व तआला अंदर क्या कैफियत पैदा करना चाहता है. हम रोजा रखते हैं तो तकवा पैदा, नमाज पढ़ते हैं तो फहश और मुनकर से हम बाज आ जाए, हज करते हैं तो हमारे अंदर इत्तिहाद पैदा हो, ज़कात देते हैं तो गरीबों का दर्द हमारे अंदर हो, गरीबी को दूर करने के लिए हमारे अंदर तड़प पैदा हो. हर अमल हर इबादत के पीछे अल्लाह ने जो है इसके लिए इसका एक मैसेज रखा है, इसका एक मकसद रखा है. We run out of time. Inshallah, we'll continue the rest of the verses inshallah tomorrow. Make sure you attend the class, don't miss it. A lot of powerful messages coming, very powerful Surah Kahf. A lot of messages for you, and may Allah SWT help us to understand these verses in the right perspective and help us to understand it and also put it into practice. Ameen. وآخر دعوانا الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.